गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु यादव और आज मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूँ कि साड़ी पे कैसे मेकअप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं शादी वगैरह में जाना है तो आप अगर साड़ी पहन रहे हैं या कुछ भी पहन रहे हैं उस पर आप किस तरह का मेकअप कर सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही हो तो ये मैंने मीशो से परचेज़ की है। अगर आपको पसंद आए भी मंगा सकते हैं, मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ये मेरे को समथिंग 1400 की पड़ी थी। आई थिंक आई विल पुट दिस स्क्रीनशॉट। ये जो साड़ी है ये रेडीमेड है, मतलब इसको ये बनी बनाई है। इसको बस आपको ऐसे टक करके यहाँ पे पिन लगानी है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। और एक यहाँ पे पिन लगा लो बस, ठीक है। और आपको इसको भी कोई पहनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो अगर आपको साड़ी पहननी वगैरह नहीं आती है तो आप ये खरीद सकते हैं। एंड आजकल ये वैसे भी बहुत ट्रेंड है, अच्छी भी लगती है। सो यू कैन ऑल्सो बाय। मैं अपने फेस को प्रेप करने के लिए सबसे पहले एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज माई प्राइमर। सो नाउ आई विल वेट फॉर जस्ट 2 मिनट्स ताकि ये सेटल हो जाए स्किन में। मेरा जो है वो मेरी फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। तो नाउ आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन। मेरा मानना है सनस्क्रीन चाहे डे हो या नाइट आपको ऑलवेज यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी स्किन को काफ़ी चीज़ों से बचाता है। इसलिए सनस्क्रीन आप अपने एसेंशियल में ज़रूर रखें। सो यहाँ गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे फाउंडेशन को अपने फेस पे डॉट डॉट करके पहले अप्लाई करूँगी। और अपने नेक पे लगाना। सो नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस वेल। बस आपको इसको डैब करना है अपनी स्किन में एंड आपका फाउंडेशन ब्लेंड होता जाएगा। So guys, now I'm applying concealer to my under eyes because I have dark circles. इस चिन ऑफ फॉरवर्ड पे से ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए फेस। Now I'm using a brush to blend this well. I'm applying compact powder to just settle out the concealer. सो गाइज, मैं अपने आइज़ के लिए सबसे पहले ब्लैक आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ अपने आउटसाइड आइज़ के आउटसाइड के लिए। एंड इसको हमको अंदर तक लेके जाना है। सो गाइज, मैं अपने आईलिड के लिए ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आई शेडो को अप्लाई कर लिया है, अब हम यूज़ करेंगे गाइस माइनर को थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि आईज थोड़ी वाइब्रेंट लगे। सो गाइस, नाउ आई एम अप्लाइंग काजल। हम काजल को थोड़ा मोटा रखेंगे।
Now applying small amount of black eyeshadow अपने काजल पे ताकि वो स्मज ना हो, एंड इससे थोड़ा सा स्मोकी लुक भी आता है. Now applying mascara to my lower lashes. Guys, I'm applying highlighter to my face. So yeah guys, अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टूर करूँगी, just a little bit. I'm using small amount of blush. So yeah guys, अब हमारा लास्ट पार्ट है लिप्स. So yeah guys, जैसे कि मैं अपने मेकअप के लिए रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और एक लिक्विड लिपस्टिक है, दैट्स वाई पहले हम इसे आउटलाइन करें. So yeah guys, जैसे कि ये मेकअप